Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I'm back with a new chapter, chapter number 3, Windows 11, GUI operating system. Okay, so Windows 11 is the most, you can say updated one. So Windows के काफी version है and Windows 11 is the updated one software operating system, okay, which we are going to learn in this chapter. So here, learning in this chapter, what is an operating system? Okay, so this is the new word for you. First, you have to understand this term and Windows 10 desktop, starting Windows or opening an app, shutting down Windows. So let's see. Here we'll learn about the operating system Windows 10, and it is the operating system which controls the function performed by a computer. So basically, students, although it was written as Windows 11, but it is not Windows 11 because it is clearly mentioned here we are going to learn about Windows 10. Okay, so let's start and learn about Windows 10, not Windows 11. So software. So as we have already learned in previous chapter, operating system is is a software. Okay, so let's see. Software is a set of programs that tell a computer what to do, right? So an operating system is the most important software needed for the computer, needed for the working of computer. So without operating system, you can't turn on your computer. Okay, just remember it. आपका जो software है, is it a set of programs जो कि आपके computer को बताता है what it need to do, what does it need to do. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर की वर्किंग के लिए. सो हियर फर्स्ट let us understand the meaning of an operating system. What is an operating system? So an operating system is a program that act as an interface between the hardware and the user. Okay, an operating system, that is also called as OS, is a type of software that manages and controls all the working of computer. It manages computers' memories, control all hardware and software, helps CPU in processing and calculating. There are two types of operating systems. First is GUI, graphical user interface, and CUI, character user interface. Nowadays, almost all operating systems are GUI. It means they are user friendly, colorful, and have icons and menus to work quickly. There are many versions of Windows available in the market such as Windows, Mac OS and Linux. अब बच्चों यहाँ पे operating system क्या है? It is a program, okay, type of software. सो बच्चों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम पहले ही कवर कर चुके हैं. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक प्रोग्राम है जो कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करवाता है यूजर. फॉर एग्जांपल आई एम ए यूजर एंड आई डू हैव अ कंप्यूटर, सो इट विल हेल्प मी and a computer to have an interface so that I can interact with computer. ये एक interface provide करता है so that I can interact with my computer system and get my work done. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट मैनेजेस कंप्यूटर्स मेमोरी. ऑल्सो बच्चों ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है सारे हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को. साथ ही बच्चों सीपीयू की हेल्प करता है, किस लिए, प्रोसेसिंग और हेल्प प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेटिंग में. सो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के बच्चों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है GUI, एक होता है CUI. सो बच्चों GUI को ज्यादा हेल्पफुल क्यों माना गया है? बिकॉज यू कैन सी ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड इट इज प्रोवाइडिंग अस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वेयर यू कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस. For example, there is an icon for a file or a program. Okay, you can see the menu very differently from the icons and you have a very beautiful colorful interface, user friendly interface. But in case of character you have to type the command which you are not going to remember forever. Okay, so यहाँ पे basically हमारे पास बहुत सारे versions हैं Windows के available in the market and Windows, Mac OS and Linux are one of them. Okay, so Windows operating system is developed by Microsoft. Okay, Microsoft is company who developed the Windows operating system. Let's see the quiz mania. Windows is or an created by Microsoft. So computer, web browser, word processor or operating system. So the answer will be operating system because we know that Windows is an operating system. Okay, so just try to do this on your own, although I have already told you the answer. Now let's see, did you know Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen?
So बच्चों, जो बिल गेट्स हैं एंड पॉल एलन हैं, ये दो लोग हैं, बिल गेट्स एंड पॉल एलन. दे आर द फाउंडर ऑफ Microsoft, and the first version of Windows 1.0 was released in 1985. Okay, since then Microsoft has released many versions like Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and 10 and so on. Till now it is Windows 11 is the most updated one operating system. Okay, my bad student for this one. So here just let me repeat it again. Windows 11 is the updated one till now in 2024. Okay, so features of Windows 11. अब हम यहाँ पे Windows 11 के features समझेंगे. So Windows 11 is the system software having graphical user interface. The operating system is user friendly. It has a multitasking capabilities. It can run several applications at the same time, and it is easier to configure on a domestic network. It has a better recovery from errors than previous version of Windows. It gets initialized faster than the previous version. The start menu has changed as the more used applications are shown. It's right, making it easier for user to use them. Taskbar has gained lot of new features and it's far more functional. So basically बच्चों, जो यहाँ पे Windows 11 के फीचर्स बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, साथ ही बच्चों ये यूजर फ्रेंडली है, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज इसमें पाई जाती हैं, और आप कह सकते हो इट इज इजियर टू कॉन्फ़िगर. व्हाई? बिकॉज ऑन द डोमेस्टिक नेटवर्क इट इज वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर, एंड इसमें बच्चों आप एरर से इजीली रिकवर कर सकते हो. ओके, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वर्जन, और ये बहुत जल्दी इनिशियलाइज हो जाता है देन प्रीवियस वर्जन. यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि स्टार्ट मेन्यू चेंज हो गया है. ठीक है, साथ ही बच्चों टास्क बार में काफी न्यू एप्लीकेशंस को एड ऑन किया गया है, न्यू फीचर्स को एड ऑन किए गए हैं. ऑल्सो बच्चों फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताएं, जो विंडोज 11 है उसमें काफी चेंजेस आए हैं. विंडोज 11 का जो आपका टास्क बार है दैट्स कम इनटू द सेंटर. इट वाज इन ऑन द लेफ्ट. ओके, आप चाहो तो बच्चों उसे क्या कर सकते हो, आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बॉटम में नहीं तो राइट साइड. दीज टू साइड्स आर ओनली प्रेजेंट वेयर यू कैन कस्टमाइज योर टास्क बार. ओके, एंड ऑल्सो आइकन्स जैसे बताया था यूजर फ्रेंडली है. नाउ लेट्स सी द विंडोज 11 डेस्कटॉप. ओके, दैट इज नॉट विंडोज 11 डेस्कटॉप बच्चों, ये विंडोज 10 का डेस्कटॉप है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन क्योंकि विंडोज 11 में जो आपका टास्क बार है दैट इज इन द सेंटर. नाउ लेट्स एक्सप्लोर द विंडोज 10 डेस्कटॉप. After switching on the computer, an operating system is the first software that starts on its own. So this process takes a few minutes. Once the process is finished, a screen known as the desktop appears. जो बच्चों आप ये screen देख रहे हो ना ये पूरी, that is called desktop. The Windows desktop consists of desktop background. Here you can see the desktop background icons which you can see here, and taskbar at the bottom side. And did you know the Windows App Store is available from which apps free और चार्ज कैन बी इंस्टॉल. अब बच्चों विंडोज में आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर है जहां से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. they have both type of softwares applications and free and charged. Okay, now let's see desktop background. Desktop background is the background picture of the desktop. We can change the desktop background and set a new one. So changing the desktop background, to change the desktop background of the computer, follow the given step. Step number 1, right click on the desktop and click on personalize. यहाँ पे बच्चों first you have to right click on the desktop, then you have to click on personalize option. A window ओके, अब विंडोज ओपन. बच्चों अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एक सेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी. चूज अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस, द बैकग्राउंड चेंजेस. अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं. यू कैन क्लिक एनी वन ऑफ देम एंड जस्ट you can change the background of your desktop, and click on close button on the title bar, and here you can see the background of the desktop is changed now. Okay, both wallpapers and themes can be downloaded from internet and used इन विंडोज 10. ओके, सो आप यूज कर सकते हो इंटरनेट से भी कोई भी थीम या वॉलपेपर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में. नाउ लेट्स सी आइकन्स. सो आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऐप, अ फाइल और अ फोल्डर.
We can see icons on the desktop at the taskbar and in all open apps such as this PC and recycle bin. अब बच्चों icons क्या होते हैं? ये small pictures होती हैं, या तो ये किसी ऐप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, फाइल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, या फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रही होती है. ये हम आइकन कहाँ देखते हैं? जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो, यहाँ पे ये डेस्कटॉप एरिया. नहीं तो बच्चों दिस पीसी एक आइकन है, जब इस पे क्लिक करोगे तब भी आपको एक आइकन नजर आएंगे. रिसाइकिल बिन ये भी क्या है? एक आइकन है. सो बच्चों यहाँ पे आप आइकन्स को देख सकते हो एंड at the taskbar in all opened apps such as this PC and recycle bin. And did you know we can get our deleted file back from the recycle bin? तो बच्चों यहाँ पे ये आपको चीज मैं अभी समझाती हूँ. This PC icon displays all the hard disk drives, saved files and folders. तो आप यहाँ पे this PC को देख पा रहे हो बच्चों. This PC में आपकी जो hard disk drives होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, आपकी सारी saved files प्रेजेंट होती हैं and folders. Recycle bin icon displays all the deleted files and folder. It is like a dustbin of your computer. So बच्चों कोई घर पर डस्टबिन होती है, what you do? You throw all the waste in that dustbin, right? So recycle bin में भी सेम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी एक रिसाइकल बिन होती है. तो आप कोई भी चीज अगर आपको नो लॉन्गर यूज वो अब ज्यादा अब्यूज में नहीं है, यू कैन जस्ट डिलीट इट. सो अगर आपने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी तो आप क्या करते हो? रिसाइकल बिन से उसे वापस लेकर अपने सिस्टम पे ओरिजिनल पेज पे ला सकते हो. बट इफ यू आर डिलीटिंग परमानेंटली देन यू कांट गेट back it again. Okay, so now let's see the hiding the desktop icon. To hide the icons on the desktop, following the given step, follow the given steps. So यहाँ पे कुछ steps ये हुए हैं, follow कीजिए. अगर आप कोई desktop icons को hide करना चाहते हो, right click on desktop, click on view. So यहाँ पे देखिए right click करेंगे तो आपको view पे click करना है. क्लिक शो डेस्कटॉप आइकन टू अनचेक नॉट टिकट. ओके बच्चों यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन, तो आपको विजिबल है. अगर आप इस पर अगेन क्लिक करोगे तो बच्चों अनचेक हो जाएगा एंड सारे ही डेस्कटॉप आइकन हाइड हो जाएंगे. क्लियर? नाउ शोइंग द डेस्कटॉप आइकन टू ब्रिंग बैक द आइकन्स अगेन, जस्ट click or tick the show desktop icons option again, then you will be able to see all the icons again on the desktop. Okay, now let's see the taskbar. So the long horizontal bar at the bottom of the desktop is called the taskbar. Here you can see this is the taskbar. Okay, so it has start button, search box, task view icon, open program icons and clock. So here you can see this one is start button, this search box, task view pane, open programs icons and clock. Okay, so here you can see this is the taskbar and all the components contained by this taskbar. Start button का क्या function है बच्चों? The start button opens the start menu when clicked. Okay, the start menu is divided into 3 sections. The left section contain icons list. Okay, my bad, that is icon list representing important menu items. The middle section contains the app list and the right section contain the files. तो बच्चों जो आपका start button है, okay, so when you will click on it, आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा. उसमें 3 सेक्शन है. पहला है आपका लेफ्ट सेक्शन, मिडल सेक्शन एंड राइट सेक्शन. लेफ्ट सेक्शन आपकी आइकन्स लिस्ट को कंटेन करती है. राइट सेक्शन बच्चों आपके टाइल्स को कंटेन करती है. मिडल लिस्ट आपके एप्स को कंटेन करती है. ठीक है, नाउ हियर search box. This is a search box where you can type a query or search for anything. First click in the search box and type the name of the app or any other query. So what can you do in the search box? You just have to click here and whatever you want to search, just type there. Okay, for example, you want to find particular file or a folder or want to open any application, so you have to type your query there. And for example, if we type word in the search box, we see the word app selected, just press enter key to open it. Here you can see what we have done here. If you want to open an application, just type the name of the application. For example, here we have written or typed word. Okay, after that you have to click, you have to press the enter key on your keyboard and then the application will get open. Clear? Now moving forward, let's see opened program icons. So when an app is minimized, it shrinks to the taskbar. Okay, in the form of an icon. So students, open program icons क्या होता है? अगर आपका कोई प्रोग्राम मिनिमाइज्ड है, दो चीजें होती है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज्ड.
तो जो आपका जब ऐप मिनिमाइज्ड है तो वो क्या होता है, ये जो टास्क बार में आप छोटे छोटे आइकन्स देख रहे हो इस फॉर्म में वो मिनिमाइज्ड हो जाती है। व्हेन वी प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द मिनिमाइज्ड आइकन ऑन द टास्क बार, we saw a small preview of the app. Here you can see this is the small preview of the app, okay, which is minimized right now. So we can click on the preview of the app to reopen it. Clear? Now let's see starting windows or opening an app. So now let's see starting windows or opening an app. So to do so, follow the given steps. Step number 1, click on the start icon. आपको कहाँ click करना है? Start icon पे. Select the title of the app or a program you want to open and click on it, or scroll the mouse to search the name of app in the app list and click on the app name you want to start. अब बच्चों सबसे पहले step है आपको start button पे क्लिक करना है आपको, नहीं तो क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ऐप लिस्ट में से टाइल लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं आप दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है बच्चों उसमें क्या करना है, आप स्क्रॉल कर सकते हो मिडल लिस्ट में, मिडल सेक्शन में, ओके। सो यहाँ पे ऐप लिस्ट पे आप स्क्रॉल करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, सो यू कैन सी द बोथ ऑप्शंस, ओके। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टाइल्स को स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ पे आप एप्स को स्क्रॉल कर रहे हो, ओके। नाउ लेट्स move forward. The selected app will open in a new window. Each window has a title bar at its top which shows the name of the open program. To the right side of the title bar there are 3 buttons: minimize, maximize और restore down and close button. अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी जब आप एप्लीकेशन ऑन करते हो तो उसके टॉप पे टाइटल बार होता है जो कि उसका नाम बता रहा होता है, ठीक है, उसका टाइटल क्या है उस डॉक्यूमेंट का ये शो कर रहा होता है। एंड ऑन द राइट साइड हियर यू कैन सी द 3 थिंग्स, दैट इज मिनिमाइज, ओके, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, 3 थिंग्स, दैट इज मिनिमाइज, maximize and close button. So and this one is program name, okay, this is called title bar. And when we click minimize, the window shrinks into a button like an icon on the taskbar, and the maximize button displays the window on full screen and the button turns into restore down button. The restore button जो आपका रिस्टोर डाउन बटन है इज क्लिक टू ब्रिंग द विंडो बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। अब बच्चों देखिए मैक्सिमाइज बटन और रिस्टोर डाउन बटन में 2 चीजें होती हैं, जब आपने मिनिमाइज कर दिया है देन यू कैन मैक्सिमाइज इट, ओके, इसे पूरा विंडो में खोल लेना। जब आप मैक्सिमाइज करते हो तो आपको रिस्टोर डाउन का बटन मिलता है। रिस्टोर डाउन बटन क्या करती है बच्चों, उसको नॉर्मल साइज में, उसके एप्लीकेशन को उसके नॉर्मल साइज में ले आती है। एंड व्हेन वी क्लिक द क्लोज बटन द प्रोग्राम gets closed, okay। So now let's see shutting down. So after we finish our work it is important to close the windows properly, right? So to do so follow the given step. Click on the start button to open start menu. Click on the power icon from the start menu. So first you have to click on the start button, then you will see here power icon, just click here, then click on the shutdown option. Here you can see the shutdown option. Windows will shut down and the CPU will switch off by itself, okay। So आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। Now let's see the vocabulary. So Windows, okay, so let's see the vocabulary. Operating system is a set of programs that controls the way a computer works and run other programs. So बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, कंट्रोल करती है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करेगा और अदर प्रोग्राम्स को रन भी करवाती है एंड कंट्रोल भी करवाती है। ऑल्दो प्रोसेसिंग सीपीयू कर रहा होता है बट सीपीयू इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एन ऑपरेटिंग system. In GUI, the user selected pictures icon selects option from menus to communicate with the operating system. GUI में बच्चों आपका user friendly environment है, you can just click on any icon to select the file or program. So now let's see, in a CUI there is no use of images, icon or graphics. The user has to learn a lot of commands as commands have to be typed without errors. So students, CUI में क्या होता है, इसमें आपको कोई इमेजेस का यूज नहीं होता, आइकन्स का यूज नहीं होता, ग्राफिक्स का यूज नहीं होता। यूजर्स को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कमांड्स को लर्न करना पड़ता है और साथ ही बच्चों उन्हें बिना किसी एरर के टाइप करना होता है। सो ये काफी हेक्टिक टास्क होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, दैट इज व्हाई GUI काफी बेटर है, यूजर फ्रेंडली है, ओके। नाउ लेट्स सी इन अ नटशेल। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है।
An operating system is a computer program that act as an interface between the hardware and user. और वहीं पे operating system क्या है बच्चों, आपका एक प्रोग्राम है जो कि इंटरफेस की तरह वर्क करता है, किसमें, एक हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में. नाउ विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. जो बच्चों आपका विंडोज है वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स आफ्टर लोडिंग विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप. और जो फर्स्ट स्क्रीन आपकी अपेयर होती है सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद वो क्या होती है बच्चों, डेस्कटॉप. द विंडोज डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, icons and taskbar. Desktop background is the background picture of the desktop. The longest horizontal bar at the bottom of the desktop is called taskbar. बच्चों जो longest bar होती है horizontal bar जो कि desktop के bottom में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, taskbar. And the start menu is divided into 3 sections. और वो कौन से sections हैं, icon list, app list and tile list. Now Cortana search box is a box where we can type a query or search for anything. So that's all for this chapter student. Now what you have to do, you have to revise your chapter and check your knowledge by doing the exercise given after the chapter. Now I'm going to meet you in the next class with a new chapter. Till then keep learning and keep exploring. Bye bye students.